अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ सीटीडी पंजाब पुलिस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को शेयर करने वाला हूं और ये हमारी वीडियो पार्ट नंबर 3 है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ वीआईपी 300 एमसीक्यू शेयर करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर के रिलेटेड एमसीक्यूज को शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू होते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसको भी फॉलो कर लें, क्योंकि जो भी नई जॉब की अपडेट आती है या किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए मटेरियल को मैं सबसे पहले वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नंबर 1 पे आते हैं, आ शॉर्टकट की टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट इन द एमएस वर्ड। तो इसका आंसर पे आता है कंट्रोल ई। नेक्स्ट, आ शॉर्टकट की टू चेंज करंट टेक्स्ट टू अपर केस इन एमएस वर्ड। आंसर पे आता है कंट्रोल शिफ्ट ए। नेक्स्ट, आ शॉर्टकट की टू अप्लाई बुलेटेड लिस्ट इन एमएस वर्ड। आंसर पे आता है कंट्रोल शिफ्ट एल। वेरी स्मॉल लेटर देन appear just above the line of text is called, इसका आता है सुपरस्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, a shortcut key to bold the text in MS Word is called Control B. One of the following is not a font style in MS Word, जिसमें आता है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। Next, a shortcut key to exit current Word file is in MS Word is called Alt plus F4. Next, a shortcut key to apply double underline the text in MS Word is called Control Shift D. Next, number of way you can save MS Word documents. इसका आंसर आता है 3 ways. Next, a shortcut key to apply single underline the text is in Word MS Word। आंसर पे इसका आ जाता है कंट्रोल यू। नेक्स्ट पे आता है, आई शॉर्टकट की टू इटलाइसाइज्ड द टेक्स्ट इन MS Word। तो आंसर पे आता है कंट्रोल आई। नेक्स्ट, अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर MS Word डॉक्यूमेंट 97 to 2003। आंसर पे आता है डॉक्स। नेक्स्ट, अ शॉर्टकट की टू फाइंड द टेक्स्ट इन MS Word डॉक्यूमेंट। आंसर आता है कंट्रोल एफ। A key to find help text in MS Word। आंसर पे आता है F1। डिफॉल्ट फॉन्ट इन MS Word 2016। आंसर आता है स्लिबरी। नेक्स्ट, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन MS Word 2016। आंसर पे आ जाता है 11। आ शॉर्टकट की टू कट द टेक्स्ट इन MS Word। आंसर के ऊपर आ जाता है कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट, a shortcut key to undo last edit in MS Word। तो आंसर के ऊपर आ जाता है कंट्रोल Z। कमांड टू रन MS Word WinWord। नेक्स्ट, इफेक्ट आर नॉट विजिबल इन वन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज। आंसर के ऊपर आ जाता है प्रिंट व्यूज। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, a shortcut key to redo next edit in MS Word। आंसर के ऊपर आ जाता है कंट्रोल Y। a shortcut key to create new document in MS Word। तो आ जाता है Control N। A minimum number of tables, columns and rows could be inserted in MS Word documents। तो आंसर के ऊपर आता है 1 column and 1 row। The MS Word template contain all of above styles, texts and graphics। Next, a shortcut key to justify the paragraphs in MS Word। तो आंसर के ऊपर आता है Control J। A shortcut key to change the text case in MS Word। तो आंसर के ऊपर आ जाता है Shift F3। नेक्स्ट, अ ग्राफिक्स टूल्स फॉर वर्ड प्रोसेसर। तो आंसर के ऊपर आता है क्लिप आर्ट। हेडर्स एंड फुटर्स आर यूज्ड इन MS Word। तो आंसर के ऊपर आता है टू शो डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन टॉप एंड बॉटम व्हेन इट इज प्रिंटेड। नेक्स्ट, अ की टू क्लियर टेक्स्ट इन MS Word। आंसर के ऊपर आ जाता है डेल। ई शॉर्टकट की टू कॉपी द टेक्स्ट इन MS Word कंट्रोल C। नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं, अ मैक्रो इन MS Word इज नोन एज अ सेट कमांड दैट कैन बी प्लेड बैक लेटर। नेक्स्ट, अ थियोरियस टूल विच हेल्प अस आवर स्पेलिंग सजेशन। ए शॉर्टकट की टू एडिट अ हाइपरलिंक ऑन द टेक्स्ट इन MS Word आ जाता है कंट्रोल K। A term is used for moving closer and or further away a paragraph to margin। तो आंसर पे इसका आ जाता है इंडेंट।
ए शॉर्टकट की टू इंक्रीज इंडेंट ऑफ पैराग्राफ इन MS वर्ड, तो आंसर के ऊपर आ जाता है कंट्रोल M। ए शॉर्टकट की टू डिक्रीज इंडेंट ऑफ पैराग्राफ इन MS वर्ड, तो आंसर के ऊपर आ जाता है कंट्रोल शिफ्ट M। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉर्मेटिंग टूल बार 8 and 72। View ruler help in all of above line of objects, table borders and top tab stops. Next, a shortcut key to use to open existing documents in MS Word, आंसर रहता है कंट्रोल O। A shortcut key to open outline views in MS Word, आंसर रहता है Alt Control O। Next पर जाएं। Minimum number of tables columns could be inserted in MS Word document 63। A default extension for MS Word document docs। A shortcut key to open page view in MS Word Alt Control P। A shortcut key to paste the text in MS Word Control V। Next, very small letter that appear just below the line of the text is called subscript। Next, a shortcut key to print a document in MS Word, आंसर रहता है कंट्रोल P। A shortcut key to print preview documents in MS Word, आंसर रहता है कंट्रोल F2। A shortcut key to save documents in MS Word, आंसर के ऊपर रहता है कंट्रोल S। A shortcut key to select all text in a document in MS Word, तो आंसर के ऊपर आता है कंट्रोल A। A shortcut key to apply styles in MS Word, तो आंसर के ऊपर आ जाता है कंट्रोल शिफ्ट S। नेक्स्ट के ऊपर आ जाएं। A shortcut key to apply subscript to text in MS Word, तो आंसर के ऊपर आ जाता है कंट्रोल प्लस। नेक्स्ट, a shortcut key to apply superscript to text in MS Word, तो आंसर के ऊपर आ जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। नेक्स्ट के ऊपर आ जाएं तो अ शॉर्टकट की टू सी वर्ड काउंट लिस्ट इन MS वर्ड, तो आंसर के ऊपर आता है कंट्रोल शिफ्ट एंड G। आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।